Good afternoon. I am AVINASH and today we are going to learn a lesson, Big Data, Big Insight. This lesson is in a 12th standard. I have already taught you ice-breaking activity in my last video. And today we are going to see this Big Data, Big Insight. See, this is ice-breaking exercise actually. We have done with this exercise yesterday. I have already recorded a video. Coming to the topic, what is big data? So big data is a term which is very important. Big data is also data but with a huge size. Big data is a term used to describe a collection of data that is huge in value, in size, and it growing exponentially with time, and it increases day by day. Okay. In short, such data is so large and complex that none of that traditional data management tools are able to store it or process it effectively. This data is so large that we cannot store it into a traditional sources, the kind of traditional sources we have. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. ये बिग डेटा कहाँ से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है. आप हर रोज जो कमेंट करते हो आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, आप लिखते हो, कुछ लिटरेचर वहाँ डालते हो, मूवीज़ डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, ये सभी को हम डेटा में कंसिडर करते हैं. सभी चीज़ें वो फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, किसी एक स्टोर में अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई पेमेंट शीट को तैयार कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें डेटा में ही कंसिडर किया जाता है. इसी तरह का सब तरह का डेटा जो है वो है बिग डेटा. लेट मी गिव द एग्जांपल. अगर आप एक ही तरह के वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो तो आपके रिकमेंडेशन में वही वीडियोस आते हैं. इसका मतलब यूट्यूब को पता है कि आपकी टेस्ट क्या है, आप कौन से कपड़े पहनते हो, आप खाते क्या हो, आप पीते क्या हो, आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो, आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, कौन सा कॉमेडियन पसंद है, कौन सा डांसर पसंद है, ये सभी चीज़ें यूट्यूब को पता है. मतलब आपके टेस्ट को वहाँ जज किया जा रहा है, समझा जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली दे आर सर्विंग यू, और उसी को देख के वो आपको सर्व कर रहे हैं. यही तो बिग डेटा का सबसे बड़ा कमाल है. आज इस बिग डेटा के वजह से हमें कौन से चीज़ों में हेल्प हुई है हम वो देखेंगे. तो एक तो इन शॉर्ट हम देखने की कोशिश करें व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वॉल्यूम. एक तो वो it is too large to store. The name big data itself is related to size which is enormous. तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बाकी सब आप पढ़ लीजिए. Then varieties. So the kind of data we are getting, it has varieties. तो अलग अलग तरह का डेटा मिल जाएगा आपको, अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग तरह का इसमें डेटा रहेगा. Okay, variety refers to a heterogeneous sources and nature of a data. अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग डेटा आ जाता है. Then आगे वाला पॉइंट हमारे पास है velocity. The term velocity refers to the speed of generation of data. The kind of speed that data has. एक दिन में कितना बड़ा डेटा आ जाता है. कैन यू इमेजिन? आप खुद भी कितना बड़ा डेटा प्रोड्यूस करते हो रोज व्हाट्सएप पे चैटिंग करके, यूट्यूब पे यहाँ वहाँ कमेंट करके. तो सेम चीज़ है कि एक दिन में बहुत सारा डेटा जनरेट हो जाता है, तो उसको वेलोसिटी स्पीड से रेफर किया गया है. ये उसका फीचर्स है. कैसे? किसका? बिग डेटा का. आपको डिटेल में खुद को पढ़ना है. वेराइटीज में लास्ट का पॉइंट ले लेता हूँ. द काइंड ऑफ डेटा वी हैव गॉट, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर्स, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर्स है, या फिर वो वीडियोज है, या फिर कोई पोस्ट के फॉर्म में वो है, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में है, या फिर वर्ड के फॉर्म में है. अलग अलग फॉर्म्स में वो हमें डेटा मिल जाता है. तो वो वेराइटीज़ के लिए आपको ये डिटेल में पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके. Okay, now we are looking big data, and this is the characteristics of a big data. Volume, varieties, velocities, all these variables, all these are characteristics of big data. Coming to the next point, यूजेज ऑफ बिग डेटा. तो बिग डेटा कहाँ का यूज़ किया जाता है इसके लिए आप ये यहाँ देख रहे होंगे, एक मतलब डायग्राम आपको दिख रही होंगी.
लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बिग डेटा का यूज़ किया जाता है. लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, सी probably you must have GPS in your mobile. Okay, do you have? Yes. So you can simply send your current location to someone, and others location also you can see. So GPS means global positioning system. So this is because just because big data. Okay, see this is a paragraph I have taken from the lesson. Big data has a big use in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and global maps makes use of a big data. With geographical positions and a radio frequency identification sensors, we get the real time data about traffic. Okay, so there are so many things that if you order something, that we can simply see whether where is your delivery exactly. You can see the position of that delivery boy. Okay, so this will help in so many ways. Okay, if somebody is outside the home and you are looking for them, so simply by tracking the location you can identify whether where is she or he, like. So this is location tracking, very important use of data, big data. Okay, second thing is that understanding the weather patterns. This is most important. Big data uses for understanding the weather pattern in order to avoid tsunami and other natural calamities. Okay, we have to use this big data, understanding the weather pattern. Like there are weather sensors and satellites set up all around the globe. Huge amount of data is continuously being received from them. So there are set up of sensors everywhere. Through that we get weather reports. Okay, तो यहाँ आगे वही चीज़ें बताई गई है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स है, अर्थक्विक है, सुनामी है, etc. So necessary preparations to combat them can be made well in advance. So for this purpose, big data is used. This is you can say read the entire point. So I am not going to explain you the entire point, but this is all about. Next is can you imagine healthcare and industry? Healthcare and industry, there is also use of a big data. Today we see that people have become health conscious. The smart watches and other wearables, health apps in our phone keep on collecting data. Like, so nowadays we have a smart watch which can count your heartbeats. And there are other facilities also. I also heard about that Arogya Setu app. So we can easily detect the infected person around us. तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आगे चली गई है, तो वो उसके लिए भी बिग डेटा का यूज़ किया जाता है. देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आल्सो, तो यू नीड टू गो थ्रू इट. आपको ये चीज़ें पढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट द लाइन बाय लाइन, इट इज़ अप टू यू. Okay, blood pressure etc. Okay, so we can simply measure it. Then next point is banking and finance. See, with the big data analytics, the investment pattern of the people can be studied. New insights have enabled the bank and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. Banking and finance sectors is using big data to predict and prevent cyber crimes, frauds detections, rituals and audit trials. So big data is also helpful in banking and finance and trading. How does it helpful? If you want to establish your own business, open your own business somewhere, you need to identify the ground. So what kind of a demand they have, ये हमें कैसे पता चलेगा? Simply by एनालाइजिंग सर्वे से पता चलेगा. सर्वे कहाँ से मिलता है? वो डेटा से मिलता है. तो डेटा हमें ये बात बता देती है कि वहाँ कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, हम कौन से चीज़ों का वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, लाइक दिस. तो ये फाइनेंस में, ट्रेड में ये चीज़ें बहुत यूज़फुल रहेगी. वही पूरी चीज़ें नीचे तक दी गई है, आपको यू नीड टू सिंपली रीड आउट द एंटायर पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द सेम थिंग.
रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स. सो ये अगर देखते हो तो ये इट मीन्स दैट दिस स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट. स्पोर्ट में भी बिग डेटा का बहुत यूज़ होता है. वेन यू आर लुकिंग मैच ना, so there is a strip of record of that player, okay, how many centuries, hundreds, catches and all, okay. So all these things will help us to understand that player thoroughly कि वो player किस तरह का है. Even there is a keen practice session or study session wherein हर बैट्समैन का, हर प्लेयर्स को कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे खेलता है, क्या करता है. तो ये सब डेटा के कारण हुआ है. किसी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो डेटा के कारण हो रहा है. हम गेम को बहुत क्लोज जाके देख सकते हैं, वो भी डेटा के कारण ही पॉसिबल हुआ है. आप लाइव टीवी में जब मैच शुरू रहती है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको बीच बीच में दिखाए जाते हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाए जाते हैं बीच बीच में. ये सभी चीज़ें पॉसिबल हुई है सिर्फ बिग डेटा के कारण, ओके. तो उसी के लिए है, व्हेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन सो मेनी permutations and combinations of statistical analysis. Gigantic data has been created over a period of a time from the recording of a matches. तो कब से मैचेस शुरू है तब से वो पूरा रिकॉर्ड स्टोर करके रखा हुआ है. सो वी कैन इजीली नाउ नो दैट कि रोहित के कितने 100 से, विराट के कितने, सचिन के कितने 100 से, ये सभी चीज़ें उसी के कारण हमें पता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन फील्ड होती है और वो डेटा के कारण हमें पता चल जाती है, ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको भी आपको पढ़ना है. एडवर्टाइजिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूसेज ऑफ बिग डेटा. Advertisers are some of the biggest players in big data. Be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant, all keep a track of the users' behavior and transactions. मैंने अभी आपको बताया कि YouTube पे आप क्या देखना चाहते हो वो YouTube वालों को पता है और उसी तरह के वीडियोस आपको आते हैं. सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, मैंने जब उसका एक वीडियो देखा तो उसके बाद उसके बहुत सारे गाने, उसके मूवीज़, उसके इंटरव्यूज़ मेरे वो इसमें थे, YouTube के गैलरी में आए हुए थे. इसका मतलब है कि YouTube हमें जानता है, हमारे टेस्ट को जानता है. मैंने कभी कभी जीन्स के बारे में सर्च करके देखा तो जीन्स के पूरे ऑप्शंस वहाँ आ चुके थे. मैं कुछ भी मतलब जब कुकिंग का वीडियो देखता हूँ तो कुकिंग के बहुत सारे वीडियोस मुझे नीचे आ जाते हैं. तो ये एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा जरिया है और जिससे ये लोग एडवर्टाइज करते हैं. उसमें बेसिकली आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सभी चीज़ों से वो एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो वो बिग डेटा का यूज़ सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता होगा तो वो ये इसी में होता है, ओके. इसको डिटेल में आपको पढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट ईच लाइन्स ऑफ दिस पॉइंट, ओके. यू नीड टू रीड इट आउट. नेक्स्ट आपको एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है. इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बिग डेटा फोकसेस ऑन टारगेटिंग पीपल विद द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम, okay. Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues. I told you this point before that, YouTube simply judge your mentality, how the kind of person you are. तो ये सब चीज़ें देख के आपको उसी तरह के व्यूज़ वो देते हैं. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का बेसिकली एग्जांपल दिया गया एंटरटेनमेंट एंड मीडिया. तो इसमें सभी चीज़ें आ जाती है जो आपके स्मार्टफोन में अभी अवेलेबल है, उसके कारण भी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं. नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डेटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एंड शोज अकॉर्डिंग टू दिस. This will allow better revenue from ads and will provide a more engagement and user experience. ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा. जब आप रामायण देखते थे तो रामायण में आपने सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अगर किसी चीज़ की देखी होंगी तो वो अमूल बटर की थी. तो अमूल बटर की एडवर्टाइजमेंट उस वक्त दिखाना जिस वक्त 77 करोड़ लोग इंडिया के टेलीविज़न सेट के सामने बैठे थे और अमूल बटर की ऐड वो दिखाते थे. तो वो जो रामायण और कृष्णा ये सब चीज़ें हैं, कृष्णा बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ बटर का एक अलग इम्पॉर्टेंट है और उसी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट दिखा के वो अमूल का प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसमें. तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, ओके. तो ये एंटरटेनमेंट एंड मीडिया में भी बिग डेटा का बहुत ज़्यादा यूसेज है. एजुकेशन, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट.
Education and industry. Big data has inundated the education industry. It has transferred it in a leaps and bounds. Now we have information about the students, their study patterns, and we can now prepare, customize and dynamic learning programs according to the needs of an individual students. Every student's comprehension level is different. The course material can now be a design category into the different requirements of the students. Big data makes it convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses, okay, and their specialities. We also have an access to the results. From the results we can gauge the process of the students, understanding his strengths and weaknesses. So we can form a notes according to the interest of a students, okay. There are difficult levels, easy levels also, so we can differentiate the notes that contained according to interest of a students. So this will help in education sector, okay. So there are numerous guides, there are numerous notes, online sites available, okay, free online sites, e-education sites also available. Nowadays there are so many apps available, okay. So this is all about just because of big data, okay. So you need to read it out this entire point thoroughly at your home. The same image I have posted here from your textbook, okay. So you need to go through it in detail. I am not going to read out the entire portion, it is up to you that, but I have already given you the basic idea about big data. What is big data? In order to know better, you need to search it out on the Google and also try to revise this portion. You can write notes in your notebook also, okay? तो इस तरह से आज हमने बिग डेटा जो है वो ख़त्म कर लिया है। यहाँ आपको इसके नोट्स निकालने हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स निकाल सकते हो, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है आपको। इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज अभी बाकी है, तो आई विल सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप, ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हेल्दी, स्टे at home, be safe and share this video. If you have any comment, you can mention in my comment box. That is all about. Thank you so much.